नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सबका इस विशेष स्पेशल ब्रीफिंग में स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि भारत जो है G20 की प्रेसिडेंसी करता है और उसी के उपलक्ष्य में जो एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप है उसकी सेकेंड मीटिंग गांधीनगर में कल से होने वाली है। उसकी पहली मीटिंग बेंगलुरु में हुई थी और जो दूसरी मीटिंग है 27 से 29 मार्च के बीच में होने वाली है। उसमें बहुत सारे विषय जो है उसमें चर्चा किया जाएगा और उसी के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं हमारे साथ हमारे कलीग उपस्थित है मिस नमिता प्रसाद, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिस्टर नीलेश शाह, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ Environment and Forest, Joint Secretary, Mr. Subodh Yadav, Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti, और Mr. Vivek Kapadia, Director, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड। तो मैं पहले नीलेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एक प्रेजेंटेशन करें, ब्रीफ करें कि क्या क्या इस बैठक में होने वाला है। Dhanyavad Prakash ji, and good afternoon everyone. We have gathered here for this press briefing on the second Environment Climate Sustainability Working Group, which is going to be held from tomorrow for the next 3 days. We have a short presentation for all of you, and I'll be taking you through the presentation. You know that the G20 presidency has come to India from the 1st of December of 2022, and under this there are various working groups under the Sherpa track, and Environment and Climate Sustainability Working Group is one of them. We are taking up this particular working group activities throughout this year, in fact till July, when we are going to have the ministerial. In the ECSWG, there are, G20, 19 countries plus EU, that makes it 20, including India. And we have 11 guest countries who have been invited for the G20 ECSWG meetings. And we have now 14 international organizations which are being invited to attend this ECSWG meeting. And just to give a recap of what we had in the last meeting, which was held in Bengaluru, the first working group meeting, we had around 124 participants. Until now, for this second working group meeting, we have had a registration of 130 participants. To share with you the roadmap for the ECSWG meetings, we have undertaken this presidency in December last year, and the first meeting has already happened in February, that was in Bengaluru, and then we have the second meeting which is scheduled here, and the third meeting is scheduled in Mumbai in the month of May, that is from 21st to 23rd of May, and the fourth meeting is going to be held in Chennai in the month of July, between 26th and 27th July, and 28th July we are going to have the ministerial which is going to be conducted in Chennai itself. And while we have organized these 4 meetings, I'll just take you to the next slide. For this ECSWG, we identified various priority areas, and the priority areas or the priority themes that you could say, they are arresting land degradation, accelerating ecosystem restoration, and enriching biodiversity. Then we have another theme which is encouraging resource efficiency and circular economy. And the third one is promoting a sustainable and climate resilient blue economy. Now, while undertaking these themes, you are also aware that there are 20 countries which are in part of the G20, and this G20 presidency keeps on shifting every year to different countries. So it's not that we are trying to build up or we are trying to come up with something new. We are carrying forward a lot of good work that has happened in the past presidencies, like the Saudi Arabia presidency, which had a lot of work on land degradation and also focusing on water.
Then we had Germany, which had focused on, the presidency of Germany had focused on resource efficiency. Then Saudi Arabia, Japan, they had focused on the blue economy. So we have picked up the threads that were there available from the previous presidency outcomes. And then we have come up with our own priorities on these three specific thematic areas, looking at or focusing on action-oriented approach that our presidency has. And all across these three themes, you are aware that Honorable Prime Minister had announced on the 5th of June about the Mission Life. In fact, he announced about the Mission Life way back in the COP26 at Glasgow, and then Mission Life was, this was announced in 5th June, and then on 20th of October, it was launched by the Honorable Prime Minister in front of, in the presence of the Secretary General of the United Nations. So, life is a cross-cutting theme across all priority areas that we are taking up. And there is a specific working group, which is Development Working Group, which is being led by the Ministry of External Affairs, which is steering our efforts on life globally. But then our various themes are also going to focus on life. How we have organized this particular our work is that we have undertaken quite a few studies. We have had focus group discussions among all the G20 countries, and we had a lot of deliberations in the first working group meeting as well. And ultimately what we want to achieve, or what we aim at, the outcome that we are going to have, is the ministerial communique that we hope is going to be adopted when we have the ministerial meeting in Chennai. Just to share with you some highlights from the first ECSWG meeting. In this meeting, we had presentations and discussions on all the three priority areas that we have mentioned. There was also a presentation from the Development Working Group. Joint Secretary from there had talked about how they are looking at life in their working group, and also the Green Development Pact. And there was a very, very positive, you could say, response from all the member countries and also the guest countries and international organizations on the approach that India has taken under the ECSWG. Just to show you a very small 1-minute video of what all happened at the first ECSWG meeting. The Global South, in particular, looks up to the G20 dialogue and desires an urgent consensus that prevents both a climate crisis and a debt crisis for developing nations. India is uniquely positioned to champion the aspirations of the Global South. I think India is doing a very great job hosting this first working group on environment and climate issues. Well, to bring all the synergies we need between land degradation, biodiversity, and climate change, which are the three most important and pressing issues on the agenda, as we need to give more resources and more technology transfer to developing countries in the world. G20 countries at the end, they own a lot of land globally, they have a lot of capacities, and they can do internally and externally, they can really contribute to guarantee that we can protect, restore, and manage land. The environment collectively in the international community has been under-recognised, under-championed, and under-promoted. India, as in its presidency of the G20 is doing, is elevating the role of environment in our lives, in the prosperous economies that we flourish, and in the communities, local, national, and international, that we seek to be part of. By highlighting the importance of these issues for the environmental and climate agenda, India is showing real leadership in having the G20 focus on these topics.
So now we are into the second ECSWG meeting, which is being held in Gandhinagar, and we have the delegates already. They have started to come in. हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अहमदाबाद का है, वहाँ पे जो उनका आगमन हुआ है और उनका जो स्वागत हुआ है, उसकी कुछ झलकियाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये जो दूसरी हमारी ECSWG मीटिंग गांधीनगर में हो रही है, आपको बस एक 3 दिन की जो हमारा जो प्रोग्राम है उसके बारे में एक आपको ओवरव्यू में आपके साथ शेयर करता हूं। कल 27 मार्च को एक हमारी साइड इवेंट हो रही है। तो हमारी मीटिंग जो होगी वो 28 और 29 को एक्चुअल मीटिंग होती है, जिस दिन सभी डेलीगेट्स जो हैं सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जो अल्टीमेटली एक हमारा जो आउटकम होता है उसकी तरफ हम अग्रसर होते हैं। उससे पहले जो कल का दिन है हमारा, उसमें हम उसको कहते हैं, और इस दिन जो है हम किसी एक थीम पे कंसंट्रेट करके उस थीम पे कई सारी जो है बहुत ही टेक्निकल चर्चाएं होती हैं और जो फीड इन करती हैं हमारे एक्चुअल मीटिंग जो होते हैं अगले 2 दिनों में। और इसके बारे में एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारी 4 मीटिंग्स हैं, पहली मीटिंग बेंगलुरु में हुई, अब गांधीनगर में हो रही है, फिर मुंबई में होगी और उसके बाद चेन्नई में होगी। हमने जो 3 प्रायोरिटी आपको बताए, उन पे हमने हर एक मीटिंग में इस साइड इवेंट के लिए फोकस किया है और साथ में मीटिंग्स में भी उस पर एक फोकस रहा है। तो पिछली जो मीटिंग हुई थी बेंगलुरु में, उसमें हमने लैंड डिग्रेडेशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन पे फोकस किया था। तो उसी हिसाब से जो साइड इवेंट हुआ था वो भी उसी थीम पे फोकस किया गया था। जो गांधीनगर में हम मीटिंग कर रहे हैं, हमारे सभी थीम्स पे चर्चा तो होगी, लेकिन हम जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको हमने एक थीम लिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से मुद्दा है फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी। तो उस पे हमारा साइड इवेंट जो कल का पूरा दिन है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को समर्पित है, और जो परसों का हमारा पहला हाफ है जिसपे मीटिंग होगी, उसमें वो पूरी मीटिंग हम वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को हमने समर्पित किया हुआ है, जिसकी लीड जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो हमारे मिस्टर सुबोध यादव हमारे वहाँ के संयुक्त सचिव भी यहाँ उपस्थित हैं, वो हमारे साथ हैं। और उसके अलावा जैसे हमने, आप यहाँ देख सकते हैं, टेक्निकल सेशन 2, टेक्निकल सेशन 3, जो मैंने आपको अलग अलग थीम बताए थे, बायोडाइवर्सिटी, लैंड डिग्रेडेशन, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, रिसोर्स एफिशिएंसी, सर्कुलर इकोनॉमी, और परसों जो टेक्निकल सेशन होंगे वो ओशंस एंड ब्लू इकोनॉमी पे होगा और एक बायोडाइवर्सिटी लैंड डिग्रेडेशन पे फिर से होगा। और एक हम चर्चा करेंगे मिनिस्ट्रियल कम्युनिके, जिसके बारे में मैंने पहले बताया है, उसको कैसे हम उसको एक मूर्त रूप दें, उसको एक स्वरूप दें उस पे। तो पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्युनिके पे चर्चा की थी और उस पे सभी जो देश हैं उनसे उनके इनपुट जो है ग्रहण किए थे, और उसके बाद हमने उसके बेसिस पे एक आउटलाइन बनाई है, और वो आउटलाइन जो है इस बार मीटिंग में हमने सभी के साथ सर्कुलेट किया हुआ है, सभी G20 देशों के साथ, और उस पे इस बार चर्चा होगी। और एक बार जब हम उस पे एक मत हो जाते हैं तो उसके बाद हम आशा करते हैं कि आगे हम जो मिनिस्ट्रियल जो कम्युनिके होगी वो उसका एक स्वरूप उभर के आएगा, जो कि एक कंसेंसस ड्रिवन, पार्टी ड्रिवन प्रोसेस के तहत होगा। सो ये जो है, ये जहाँ तक मेरे पार्ट का प्रेजेंटेशन है वो है। बट इससे पहले कि मैं अपना पोर्शन अंत करूँ, मैं जो गुजरात सरकार है जिन्होंने ये दूसरी मीटिंग हमारी जो है, जो गांधीनगर में आज जिसका आयोजन हो रहा है, उसको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ हमें ये फैसिलिटेट किया है करने के लिए, बट लेकिन बहुत ही आगे बढ़ चढ़ कर हमें एक तरह से मार्गदर्शन भी किया है कि हम किस तरीके से इस मीटिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से इसका आयोजन कर सकें। और कल की जो साइड इवेंट भी जो है उसमें जो एक उसके बाद एक एक्सकर्शन है जो आप देख रहे हैं, एक्सकर्शन एंड साइट सीइंग की बात है, वहाँ पे भी गुजरात के कई सारे फैसिलिटीज जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है उसको दिखाया जाएगा G20 कंट्रीज को। तो इस सभी प्रयोजन के लिए मैं गुजरात सरकार का, अपने मंत्रालय और भारत सरकार की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारी फोकस इस बार की मीटिंग की है जल संरक्षण पे, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे, उस पे आगे चर्चा करने के लिए और आपको उसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने मित्र सुबोध यादव को।
थैंक्स अलॉट नीलेश। जैसा कि अभी बताया गया कि इस बार का जो फोकस है वो वाटर है, तो वाटर फोकस होने की वजह से कुछ चीज़ें जो स्पेसिफिकली हम कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूँगा। तो अभी जैसे कि कल से ये प्रोग्राम चालू होगा, तो फर्स्ट पॉइंट वुड बी कि इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ये किस तरीके से किया जा रहा है उसके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे सुबह से लेकर के। और जो G20 कंट्रीज आए हैं उन सब की अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रेजेंटेशन भी करेंगे। तो ये अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 37 बेस्ट प्रैक्टिसेस आई हुई हैं और सभी कंट्रीज जो है अपनी एक एक बेस्ट प्रैक्टिस का प्रेजेंटेशन करेंगे। और उसके बाद हम सभी डेलीगेट्स को यहाँ पर हमने एग्जीबिशन भी लगाई हुई है, तो वाटर के क्षेत्र में जो काम हो रहा है पूरे देश में, सो सम ऑफ द मेन आइटम्स विच आर बीइंग डन बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द मिनिस्ट्री, उनका एक प्रेजेंटेशन, उनका एग्जीबिशन है। और उस एग्जीबिशन में मुख्यतः जो स्पेशल जो काम हो रहा है अटल भूजल में जो हो रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन वगैरह, नमामि गंगे, उन सब के बारे में एग्जीबिशन है, तो वो भी हम दिखा रहे हैं। उसके बाद जो है आफ्टरनून में हम सभी डेलीगेट्स को, जैसा कि अभी बताया गया, एक्सकर्शन विजिट पे ले जाएंगे। तो दो हमने मुख्य जगह जो सिलेक्ट करी हैं, उसमें से एक है जो अदालज वाव, जैसा कि आप सबको मालूम है ये एंशिएंट स्टेप वेल है, और ये हमारा एक तरीके से इट रियली डिमॉन्स्ट्रेट द एंशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड द ट्रेडिशन which is prevalent in the country. So that is how specifically this place has been selected for this purpose. Thereafter we will take the delegates to the Sabarmati Siphon, and which is one of the very specific kind of engineering, let us say, the achievement which we have. Of course, the Narmada River, it is on the Narmada River, and not only the siphon, we have the escape also, to both the points which we will show there. There is very specific points for the siphon that this allows the water to flow under the tunnel, and over that river Sabarmati is there. So this is something very special which we want to show to the delegates. Of course, thereafter we will take the delegates to the riverfront, and the purpose of taking them to the riverfront is to show the in general improvements which has been done for the social upliftment and the sustainable development angle. This is maybe just after the siphon visit. It may take maybe half an hour kind of a thing from there. The next day, the formal inauguration of this program will be on the next day, and Honorable Union Minister of State, Railways and Textile, Mrs. Darshana Vikram Jardosh, she is supposed to inaugurate this event formally the next day, and thereafter there will be the thematic presentation on water resources management, and specifically on the some of the 4 major presentations have been kept for this purpose, which have been highlighted in the slide. The Namami Gange presentation will be on the river management and boosting economy and livelihood. The second presentation will be on the climate resilient infrastructure, where water resource development through technological interventions with the climate resilience strategies, that would be the focus area. That will be followed by the groundwater, participatory groundwater management, and thereafter Jal Jeevan Mission and the Swachh Bharat Mission presentations would be there. Once the water side presentations are over, then as Nilesh has mentioned, in general presentation, which is from the MOEF side, those would be taken over. Right.
So this is how we have planned. If there is any query, we can clarify. किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं. Sir, Meghna Dev from DD News. There were discussions on blue as well. So will that also be one of the topics on the agenda? Is what I wanted to know. Marine litter as well as conservation of marine ecosystems. Yes. As I showed to you on one of the slides, where we had. Let me take you there. It will take time. So in any case, this will be on the agenda. Blue economy is one of the theme areas. So apart from the focus on the water resources management, which is for the side event and the first half of the first day, the meetings that we are going to have. Apart from that, the three theme areas that we have related to land degradation and biodiversity, ecosystem restoration, and resource efficiency and circular economy, and also blue economy, we are going to have dedicated sessions dealing with these thematic areas as well. I have an additional question to this. In the first half, there are countries expected to, give presentations on how they are conserving water. Can you give in details on what countries are participating in this, and what would be the area of focus on water conservation that they are showcasing? On the countries participating, I'll just mention, yes. These will be the G20 countries and the guest countries only. So the presentations will be by them, but how and what about the content part that you have asked for, I'll hand it over to Subhash. Can I find out the person? Okay, all right. So as I have mentioned, there are some 37 best practices which have been identified. So more or less each country has given either 1, 2, 3 or in 1 or 2 cases 4 best practices also. So these best practices are in varied areas, from hydro energy management to water data information, flood management, safe drinking water, river rejuvenation, water body restoration, water harvesting, sustainable water resource management, safe and drinking water. So more or less, it's a huge, more or less covering all kind of aspects as far as the water resource management is concerned. Is it all right, or do you want to know even the country specific also? Because we have that information, I can share with you after. I would love to have that as well. We can share with you after. Sure. और कोई सवाल है? Thank you for coming. मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी सिमिलर ब्रीफिंग जो है वो 28 तारीख को भी होगी इसी वक्त, और एक जो पोस्ट इवेंट, सारा इवेंट जो मीटिंग खत्म होने के बाद 29 तारीख को भी हम एक पूरी चर्चा क्या हुई उसके बारे में ब्रीफिंग करने के लिए भी हम आपको आमंत्रित करेंगे. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. आई इनवाइट यू ऑल फॉर ए कप ऑफ टी.